कोनो भोज भेल आ ओहिमे यदि घी नहीं भेल तो भोज के बढ़िया नहीं मानल जाइत अछि। मिथिला में तो अधिकांश भोज में जखन घी पड़ै छै ताहिके बादे शुरुआत मानल जाइ छै। घी में बहुत विटामिन्स होइत अछि, मिनरल्स होइत रहै छै, तो स्वाभाविक छै जे लोग के बच्चों सबके खुआल जाइ छै, बूढ़ो सबके खुआल जाइ छै, घी प्राय सबके खुआल जाइ छै। लेकिन अपने के बुझल है किछ चीज एहन छै जे घी संगे नहीं खेबाक चाही, जाहि में बहुत रास चीज छै जे घी के कॉम्बिनेशन ओ स्वास्थ्य के लेल फायदाकारक के जगह पर उल्टे हानिकारक भ सकैत अछि। तो आइ हम सब घी संगे 4-5 टा चीज नहीं खेबाक चाही ताहि पर चर्चा करै छी। घी आ मध दुनू स्वास्थ्यक लेल बहुत बढ़िया मानल गेल अछि, मुदा आयुर्वेद में दुनू के एक संग लेबऽ में वा प्रयोग करऽ में मना कयल गेल अछि। दुनू के एक संग लेला से शरीर में टॉक्सिन बनैत अछि, जाहि के असर हमरा सबके डाइजेशन पर पड़ैत अछि। एना में ई दुनू के अपना डाइट में सहभागी कराउ, मुदा अलग अलग समय में। चाय आ कॉफी में सेहो घी मिला कऽ नहीं पीबाक चाही, एकर असर हमरा सभक डाइजेशन पर पड़ैत अछि। एहि कारण एसिडिटी आ ब्लॉटिंग के समस्या भ सकैत अछि। आयुर्वेद में घी आ माछ के एक संग लेब सेहो मना कयल गेल अछि। आयुर्वेद में घी के गरम आ माछ के ठंडा मानल गेल अछि। जखन दुनू एक संग खायल जाइत अछि तऽ एकर असर डाइजेशन आ स्किन में समस्या आबि सकैत अछि। घी के दही में सेहो नहीं लेबऽ के कहल गेल अछि। दुनू एकेटा चीज से बनल होइत अछि, एकर बादो दुनू एक दोसर के पूरा अपोजिट अछि। जतऽ घी के गर्म आ ऑयली मानल गेल अछि तऽ ओतहि दही के ठंडा आ भारी मानल गेल अछि। दुनू के एक संग खेला से डाइजेशनक समस्या आबि सकैत अछि आ मेटाबॉलिज्म स्लो भ सकैत अछि। मुरई आ घी के कॉम्बिनेशन सेहो डाइजेशनक लेल प्रॉब्लमक कारण आबि सकैत अछि। मुरई कनि कड़ा होइत अछि आ गर्म होइत अछि, जाहि कारण एकरा घी के संग लेला पर पेट में गैस बनि सकैत अछि आ फेर ब्लोटिंग भ सकैत अछि।